anything that is stopping us from becoming the highest version of ourselves is something which is messing up your spirituality. It's as simple as that. So around 18 years of age, I came across the concept of the secret, right? The law of attraction. And earlier part of my 20s, I've lived my life with the faith of law of attraction. Whether you are a man or a woman, या आप टीनेज में हो, 20s में हो, 30s में हो, आई एम श्योर कभी ना कभी आप इस एक वर्ड से रूबरू ज़रूर होंगे जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी, जिसने आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट ज़रूर पैदा किया होगा. और आज हम इसी वर्ड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं विद वन एंड ओनली माई को होस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड कोच इन आवर कंट्री, यश वर्धन स्वामी. First of all, thank you for the introduction, Abhinav. But आपने best podcaster नहीं बोला. वो we have to reach that level soon. I think our audience will be the one who will be judging that for us. Yes, guys, we'll get there soon if you think we are not there yet. So guys, आज हम बात कर रहे हैं spirituality की. बहुत ज़्यादा misunderstood topic है. Before we start with our point of view and how we define spirituality, Wikipedia की definition कर देता हूँ. मेरे सामने है. Wikipedia की definition, दो definition थी. First is it is something which is concerning religion, spirituality. The other one is it is something which is concerning deep thoughts, deep feelings and emotions. So Abhinav, ये थी Wikipedia definition. आपकी क्या definition है? यार ऐसा है, देखो spirituality पहले तो बहुत सारी terms हैं इस चीज़ को लेके, enlightenment, right, inner healing, child healing. और तो आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करते हैं. बट अगर सिंपल वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी को ब्रेकअप करें, यानी कि स्पिरिचुअल एंड इटी, तो स्पिरिचुअल मीन्स कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट. Okay, yes. So we say that we are human and then we have a spirit that or an energy inside us. ज़्यादा religious नहीं होंगे, but just to make it simple, it is connecting with the spirit. It is connecting beyond your name, your face, how you look, what you wear, कहाँ पे आप पैदा हुए हो, कैसे आपके दोस्त हैं, क्या आप काम करते हो. उसके अलावा आप जिस तरह लाइफ से कनेक्ट करते हैं या लाइफ को देखते हैं, for me that is spirituality. But again, it's just a term and it is my personal opinion. Right, so spirituality is a very subjective experience. Yes. For me, if I talk about myself, for me it's alignment of our mind, body and soul. Agar if all of these three things are in alignment, irrespective of anyone's definition, you are spiritual according to me. Irrespective of the religion, irrespective of how Abhinav defines it, irrespective of how I define it. अगर ये तीनों चीज़ें आपकी in sync है, that means you are on a spiritual path already. So Abhinav, जैसे स्पिरिचुअलिटी है आपके, जैसे आपने मेंशन किया कि हर किसी की एज में किसी ना किसी ने, हर एज में किसी ना किसी ने तो सुना ही होता है ये वर्ड. राइट. आपने फर्स्ट टाइम क्या कब सुना, कब आपको रियलाइज हुआ एक्चुअल मीनिंग, और आपने अपनी ये जो डेफिनेशन है कब बनाई? Honestly, my dad was always an avid follower and you know, he used to talk a lot about Osho. So अगर किसी ने spirituality या spiritual world में थोड़ा सा भी अपने आप को dive in किया है, तो they must be familiar of the word Osho also. So I've been listening to spirituality since my childhood, but I always felt it is very cringy. Because just spirituality, my dad used to be a meditation करनी है शांत रहा कर, because I know that you also had anger management issues. I also had the same. Yes. But I became serious about this word in my early 20s, around 21, 22, when I actually I left my home and I wanted to make my way on my own, stand up on my own feet. And you know, I went to modeling, तो वहाँ पे थोड़ा struggling phase था. And उस time ये word थोड़ा ज़्यादा बारीकी से चिपक गया मेरे साथ एक तरह से, because for the first time ever I came across the word, I won't say the word, but I came across something known as stress, right? Yes. The real stress, life, yes. like survival yes. stress.
तो उस टाइम I was looking for something that could give me mental peace. I was a very focused person, so alcohol, drugs, these were not something I was into. So spirituality came across, and then I started diving in more and और ज़्यादा जानना शुरू किया इसके बारे में. So around that time it was कि जब मैं I got familiar with this word. What about you? What was your experience? Before I talk about myself, फिर question है मेरा. जब आपको first time आप come across हुए versus now, has the definition changed? बिकॉज काफी साल हो गए उस चीज में. कोई डिफरेंस या मतलब आपके अकॉर्डिंग टू यू हैज द डेफिनेशन चेंज फॉर यू बिकॉज इट स्टार्टेड विद जस्ट वन पर्पस दैट वाज स्ट्रेस मैनेजमेंट. Right. Yes, definitely. Us time it was more of a child's approach towards this word. A lot of curiosity. Yes, spirituality hoti kya hai bhai? It started with meditation, and then it started with finding more gurus and more mentors, those who can teach spirituality. Now, after so many years, it's almost been 10, 11 years since I've been using this word or being familiar with this word, diving in this word. Now it has become a part of my life. For me now it sounds or it feels as if it's a very natural thing that comes. And as far as the definition is concerned, I don't define it, but because you asked me ki definition hoti kya, so I said it. But for me now, this word spirituality has gone more towards something you call awareness. Now I'm more attracted to that word. Like awareness, jo cheez hai, for me that has taken over the word spirituality, and that gives me more peace, tranquility, serendipity, whatever you want to call it. This is actually a great pointer, because in the end, for most of us, we are not even aware of our thoughts. Right. We are not aware of what we have been doing, our actions, and in the end, हमें अगर पता ही नहीं कोई चीज में issue है, तो we won't ever be able to fix it. Talking about my journey, मेरी journey भी similar थी. Meditation से start हुई. वही था कि मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने. बिजनेस वाज डूइंग अमेजिंग बट आई स्टार्टेड लूजिंग स्लीप. मैं कहा चलो मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं. बाय द वे गाइस, मेडिटेशन पे वील डू अ डिटेल्ड एपिसोड बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव बीन डूइंग इट सिंस ईयर्स. सो मेडिटेशन से स्टार्ट हुआ. माई गोल वॉज जस्ट टू इम्प्रूव माई स्लीप इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई. फिर मैं कहा यार ये अच्छी हैबिट है बिकॉज आई एम लर्निंग हाउ टू कंट्रोल माई एंगर. सबसे बड़ा मेरे लिए एक इशू था कि एंगर पे कंट्रोल ही नहीं था कुछ भी. वो हुआ. उसके बाद लास्ट ईयर, सो ऑलमोस्ट मुझे 3.5 years हो गए हैं रेगुलरली मेडिटेट करते हुए. लाइक एवरी डे मीन्स एवरी डे. लास्ट ईयर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ. इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन ऑफ साइंस. राइट कि न्यूट्रिशन में भी साइंस की बात कर रहे हो, बॉडी में भी साइंस की बात कर रहे हो, हर चीज़ में. तो अचानक एक दिन मेडिटेट करते हुए आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट लॉर्ड शिवा. राइट. सो ऑल्दो गाइज इन एनी वे आई डोंट मीन टू से दैट inclination towards one Lord or one God is spirituality, but I'm just sharing what happened with me. So I just started reading about him. One very interesting thing is कि in my family lot of times ये होता है कि family में लोग for example शिवा को अगर follow कर रहे हैं तो I would also follow them. Family में no one follows Shiva directly. So हनुमान जी को ज़्यादा वो करते थे मेरी फैमिली में. तो I started reading more and then it automatically started becoming a part of me. And कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा. नाउ इट्स लाइक ओम नमः शिवाय शिवाय कीप्स ऑन हैपनिंग थ्रू आउट द डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो दैट्स समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग फॉर मी. ब्यूटिफुल. एंड दैट इज हाउ द जर्नी इज गोइंग. बट फेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का. वो भी डिस्कस करेंगे इन अ बिट. बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टूल्स फॉर स्पिरिचुअलिटी, let's talk about things that can mess up spirituality. अभिनव, आपको क्या कौन सी ऐसी चीज लगती है कि जिससे मतलब mess up हो सकती है spirituality? I won't say mess up, but I've been through that phase जहाँ पे I took that word spirituality so close to my heart and I took it so seriously in life that I actually stopped enjoying all the normal or the materialistic things that the life has to offer. So I became someone, I won't say I became someone, but those thoughts became a dominant part of me जहाँ पे आपको लगता है ना कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना है. Right? I think that is the only thing, because see, one thing when you realize this word spirituality and you start researching and digging deep down, doing meditation, connecting with yourself, being aware about your thoughts, one thing you realize is that this life is way more than what it seems to be.
Yes. Right? Like whatever you are watching, it is kind of an optical illusion that is happening. So there will be a lot of times that you realize that you have put in all the effort, you have put in all the, whatever was in your hand, you've done that, but still things don't come out as you wanted, because there are a lot of factors that are working in favor of you also at times and against you at also times. Another thing that you realize that there's a lot of suffering. Yes. Okay, that is one realization that someone realizes as you, जैसे आप एक बच्चे के उससे mature होते जाते हैं, you start becoming a man, you start seeing a lot of sufferings around you, you start experiencing a lot of sadness, not being negative, but it happens. And उसके बाद आपको mentally, when you become too serious about this word, you start taking it too seriously. आपको ना सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन करता है. Yes. Right? And I've been that phase, and I still laugh with my friends at times. There was a time in my life, I was in US, I remember that story. And I was really done. I was really wanted to leave, and I was like, मैं हिमालयस में जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं दुखी हो गया हूँ. And then there was this, I was in Los Angeles, and I was in the back of an Uber, and I was just checking with one of the drivers. So he was, I don't know, he was a shaman, but he had a good intuition power. He said, boy, are you stressed about something? I'm like, yes, I want to quit the world, and I want to become a monk. I want to go bald, and I want to go into meditation. So he said, go to Tibet. Right? Yes. So that was one of the phase. And I've brought myself out of that phase, and I've seen a lot of people going towards that. So in short, yeah, like that is one thing that I feel can work against you if you start taking it too seriously, and you might want to quit everything and just run away. Right. This is a great pointer. So आपने उनकी advice मानी कि नहीं? Fortunately, I got some good people around me who prevented me to do that. Right. So he was saying कि permanent चले जाओ Tibet. He was just advising me. I was the one who was asking मैं जाऊँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप बताओ जाऊँ कहाँ पे मैं? Because I'm done with it. Okay, आप लोकेशन पूछ रहे थे. I लोकेशन पूछा. He said go to Tibet. I said चलो ठीक है. मुझे लगा टैक्सी राइड पे वो एडवाइस ही देने लग गया कि अपनी लाइफ चेंज करके जाओ. चलो, good है. Tibet, nice guys. If anyone wants to go, don't go actually. Don't go. Understand these things deeply, and 1 in a million people, this advice might fit that person. Yeah, and for me, anything that is stopping us from becoming the highest version of ourselves is something which is messing up your spirituality. It's as simple as that. Anything where your thoughts and your actions don't match. बहुत बार हम सुबह उठ के सोचते हैं, मेरे लिए तो छोटी से छोटी चीज़, अगर मैंने सुबह उठ के सोचा कि यार आज मैंने ये काम करना है और वो मैंने नहीं किया, and that's against spirituality for me, because there's this kind of person who I want to become, and whatever action I take in my life, it is a vote towards the kind of person I want to become. नहीं कर रहा वो मैं काम, खुद को promise कर रहा हूँ और नहीं कर रहा, then what I believe is कि I'm moving away from spirituality. In the end, या मैं खुद को जो promise कर रहा हूँ और वो ही कर रहा हूँ, then I'm moving towards spirituality. So thoughts and actions match करें, because for most men, सबसे बड़ा मैंने issue ये देखा कि मोटिवेट होते हैं, सोचते हैं आज करियर फिक्स कर देंगे, कल बॉडी फिक्स कर देंगे, परसों रिलेशनशिप्स फिक्स हो जाएंगे. इन एक्चुअलिटी सोचते हैं बट मोटिवेशन पे लोग रन कर रहे हैं, खुद को प्रोमिसेस करे जाते हैं ओवर टाइम. एंड अगर जितने लंबे टाइम तक आप खुद को झूठी प्रोमिसेस करते रहोगे, उतनी आपकी सेल्फ इमेज और ट्रस्ट इन सेल्फ कम होता जाएगा. सो इन द एंड कोई भी एक्शन है, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट, हाउ जॉर्डन पीटरसन सेज दिस, दैट सिट अलोन इन अ रूम and ask yourselves, what stupid things am I doing in my life right now? और आपको within minutes answer पता होगा, because in the end, deep inside, we always know that. Start with subtracting them. So my advice here would be that instead of addition, start with subtraction. Right. Apart from that, Abhinav, so कुछ भी spiritual पढ़ो, in the end ये तो बड़ा common सा rule है कि भाई intoxications, अल्कोहल, ड्रग्स, सारी चीजें आपको इन अवे स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाती हैं. आपका क्या व्यू है इस पे? See, firstly, let's talk something known as ego. Yes. Right? So ego is necessary also, but सॉरी आपको कट कर रहा हूँ. ईगो आप मेरे को डिफाइन करो प्लीज. See, ego at the end of the day, I'll just give you a simple example. Ego is something that prevents you from shitting on the streets. Yes, it prevents you from having open sex on the streets, even if you want to have it. It's something for your protection. It's something for your survival. Of course, you can give me the best scientific definition that is out there. But if I have to say it in layman terms, ego is a protective mechanism that we humans have to
be more civilized. This is a great, this is a learning for me actually, because generally ईगो की जब बात करी जाती है कि कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अभिनव में ईगो है, पॉजिटिव लाइट में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एटीट्यूड है. एटीट्यूड और ईगो को काफी लोग कंफ्यूज करते हैं. Yes, definitely. See, ईगो अगेन पानी को भी ज्यादा पी लोगे, हाँ जी, वो भी नुकसान कर सकता है, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाएंगे बॉडी में, ज़्यादा पानी पीते हैं. मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ही पी रहा हूँ अभी. बट देखो वही कि दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद द ईगो पार्ट, बिकॉज आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड ईगो दे गो हैंड इन हैंड. लाइक व्हेनेवर यू आर स्पिरिचुअल, द फर्स्ट थिंग दैट दे से, ड्रॉप योर ईगो. Yes. But you cannot 100% drop your ego if you have to live in this world. Yes. But again, let's come back to the point. अब ego की बात करते हैं. Now, ego when it exceeds to the point where you start feeling cut off from the whole world. Like Yes. एक ego आप use करते हो for the civilization, for to behave in a civilized manner, Yes. and to have good interpersonal relations, and to set boundaries with the other humans, and to protect yourself. Yes. Okay, and then there's point, and this is where the drugs. Like marijuana, Yes. and I won't say alcohol also comes Yes. with it, but I'll say drugs which have those psilocybin, the substance Yes. that has that THC, Yes. which sometimes changes your neural patterns हाँ जी. in a way जहाँ पे आप अपने आप को एक वही जो स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड को एक ईगो के साथ जोड़ के यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ हु हैज असेंडेड दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड यू आर समथिंग एल्स नाउ. आप खुद को एक तरह से भगवान के रूप में देखने लग जाते हो, या आप अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लग जाते हो बाकी लोगों से. एंड ड्रग्स लाइक marijuana, it amplifies that. Right. It does amplify that. Yes. Because when you use them, आप बातें क्या कर रहे होते हो, वाह भाई क्या पेड़ लग रहा है. Like I remember whenever I had the first experience of a substance like this, Yes. my experience was touching a tree and I was like, ये पेड़ है. And a lot of my friends know that. I've told them the story. Yes. I'm like, ये पेड़ है. Like that started from it. Then you start becoming so fascinated about each and every Yes. experience becomes intense. अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूँ अभी बादल गरजेगा, Yes. I'll be like, oh my God, God is watching. Yes. God is looking at us. He's making this moment right now. Yes. And I'll start feeling so intense कि मुझे सबकी बातें, सबके experiences बहुत ही छोटे लगने लग जाएंगे, और Yes. अपने experiences, अपनी life इतनी amplified लगेगी कि everything that matters to this world is me. Yes. Right? So that is the ego formation, that ego का एक दूसरी स्पेक्ट्रम में चले जाना, एक एक्सट्रीम एंड पे चले जाना, जहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है दूसरों से, या आप खुद को एक बड़े लेवल पे देखने लग जाते हो एज कंपेयर टू द अदर पीपल अराउंड यू. Yes. This is one thing that I would say that drugs Yes. can enhance, and attaching that spirituality with your ego कि मैं spiritual हूँ. I think a lot of people use this. मैं spiritual हूँ, that means I'm more wiser. Yes, I'm better than others. I'm better, I'm Yes. wise than you. Yes. Yeah. So that would be my call or my take on these Yes. effects of these drugs. So ये एक्चुअली मेरी भी खुद की भी स्टेज आई थी कि जब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुई, मेडिटेशन, मेरे को अंदर से लगने लग गया कि आई एम वाइजर देन अदर्स. बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज इन द एंड इट स्टार्टिंग विद नंबर वन, यू कंपीटिंग विद अदर्स. आप मन में सोच रहे हो कि भाई कॉम्पिटिशन चल रहा है. दूसरा, आप बाकी सारे लोगों को जज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम बी. Right? So this is great. And a lot of times when I talk to my friends and people who try new substance or something like that, I ask them, how do you feel? Most of the times their reply is, I feel like I'm on the top of the world. Yes. Right? But the rule is, हमने guys addictions पे topic बना, पूरा podcast बनाया हुआ है, whatever goes high must come down. Right. So अभी आप फिलहाल बहुत high feel कर रहे हो, the next day the after effects are very bad. Condition being assuming that you go off these things, and आप अपनी body को normalize होने की वो कर रहे हो. मेरा personal take इस पे intoxications पे ये है कि यार in the end ये आपकी वाइब्रेशन लेवल स्लो कर रही है. बहुत लोग, मैंने आई हैव सीन सो मेनी पीपल, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूजिंग मैरिजुआना एंड स्मोकिंग अप, पीपल आर लाइक शिव जी भी तो करते थे. आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच. It's just trying to justify whatever wrong you're doing. Right. Justification के मामले में बात करी जाए अभिनव, तो basically I can murder someone and justify that. जो psychopaths होते हैं, आप यूएस में देखते हो शूटिंग कर रहे हैं, उनसे बाद में पूछो कि आपने मर्डर क्यों किया, they have a justification for that. Right. But again, उनकी भी stupid होती है बहुत times. If you are doing these things in lieu of spirituality, it is also stupid. Also एक और चीज़ है अभिनव, would you like to add anything on this?
No, just adding on to a bit of it, because we talked a lot about dopamine in our addictions topic. So again, the same thing, these drugs, they have a way, because usually people come across these drugs as recreative drugs, Yes. or they are in a phase of their life where they are down. Yes. They don't have enough of stimulation, or they don't have enough of drive in them, Yes. that their body can produce normal dopamine levels. And then you start using this. Even if your body is producing dopamine levels, आप इन drugs को use करते हो, आपकी body को 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा dopamine feel होता है, आपको तभी अच्छा लगता है आपको 100%. एंड वही अगले दिन आपको डाउन इसलिए फील होता है बिकॉज आपकी बॉडी जो है आपको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं दे पा रही है. नाउ यू आर अगेन बैक टू दैट And even lower actually. या इवन लो लाइक विद टाइम इट बिकम्स लोअर बिकॉज आपकी बॉडी के पास अब रीजन है बिकॉज इट नोज दैट यू ऑलरेडी हैव जैसे हम स्टीरॉइड्स की बात करेंगे कभी भी किसी भी उसमें तो स्टीरॉइड जब आप देते हो टेस्टोस्टेरोन जब आर्टिफिशियल दे रहे हो आपकी बॉडी स्टीरॉइड्स बनाना आपकी टेस्टोस्टेरोन को बनाना कम कर देती है अपनी बॉडी में से बिकॉज इट नोज आप आर्टिफिशियल वे में दे रहे हो. तो उसी तरह डोपामीन का भी जो है योर बॉडी नोज यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग इट फ्रॉम द आउटर एंड एंड डोपामीन इज an important hormone to feel happy, to feel drive, to feel motivated. Yes. So that is one thing you should always be careful about. If you feel that you are trying to taper off, if you are trying to get rid of certain drugs, that is one mechanism that is dominating in that particular thing. Definitely understanding that. And next is basically practicing but preaching but not practicing. Abhinav, you'll see so many people, किसी भी random बंदे पे जा चले जाओ और advice मांगो, they would give you the best advice. Yeah. But the main thing is, are they applying that on their own? Right. Especially in social media world, everyone is a spiritual guru, right? Are they actually applying that in their real life? Right. So अगर आप कुछ preach करते हो वो practice करो, अगर practice नहीं करते हो तो preach मत करो, because that's not spirituality. Everyone wants to act like a guru, but no one wants to be one. Right. So, and this is not just linked to spirituality, this is linked to everything else. Right. Everyone wants to act a certain way. Right. A perfect human being and stuff like that. And social media पे personally मैंने देखा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा overuse होने लगी है कि कोई बंदा genuinely भी कर रहा होता है तो people are like trolling them and it's like आपको क्या पता होगा वैसे सोशल मीडिया का, आप बताओ आपका क्या व्यू है इस पे. नॉट रियली यश, मतलब मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ बट डेफिनेटली आई एग्री टू द पॉइंट दैट यू सेड दैट प्रीचिंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग इज वन ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी. द रीजन बीइंग इज, देखो यार सिंपल सी बात है, आप पैसे कमाना चाहते हो, क्या आप किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लोगे जो खुद ब्रोक है? Yes. Right. So we have a lot of financial advisors who might just have, been into the market, but they start promising. Their first business is teaching business to others. Exactly. Like अगर आप इतने ही बड़े महान हो तो आप खुद की लाइफ में दिखाओ ना हमें वो इम्प्रूवमेंट. सेम वे अगर आप फिटनेस की बात करो, क्या आप किसी ओवरवेट इंसान से फिटनेस की एडवाइस लेना चाहोगे, चाहे उसने जितनी मर्जी लिटरेचर पढ़ लिया, चाहे उसने लेन नॉर्टन पढ़ लिया है, चाहे उसने ब्रैड शॉनवेल्ड पढ़ लिया है, सभी जितने भी फिटनेस गुरुज थे उनसे देखे नॉलेज ले. बट वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड कॉल्ड क्रिस गेथिन, ही यूज्ड टू से knowledge without mileage is bullshit. Yes. This is a great word, and guys, by the way, Chris Gethin is the top guys. Yeah, like and Abhinav he is one person that we can say in fitness who actually practices what he preaches, and you can look at him. He, like anyone who looks at him for the first time and knows that he's in his 40s or late 30s, you'll be like in awe. But anyways, let's come back to the point. Same thing happens in preaching, not practicing. अब देखो सदगुरु जी ने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं and we all have access to it and we all love him because आपका ब्रेकअप है, जॉब नहीं मिल रही है, ब्रोक हो, घर वालों से तंग हो, आप टाइप कर दो हाउ टू गेट ओवर ब्रेकअप सदगुरु, राइट? आपको एडवाइस मिल गई तो आपने देख लिया, आपने उसको सुन लिया. पहले उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में. ये नहीं कि आपने सुन लिया, आपको वो डोपामिन राइज मिल गया, आपको ऐसा लगा हाँ मेरे को सब कुछ पता लग गया, मैं ही सदगुरु हूँ. एंड नाउ एवरी टाइम यू आर गिविंग दैट सेम एडवाइस टू ऑल द फ्रेंड्स. Yes. सो यू स्टार्ट गेटिंग दैट, वो जो ईगो की हम बात कर रहे थे वो आप अपने साथ अटका लेते हो कि नाउ आई एम द सदगुरु, नाउ आई हैव ऑल होल अंडरस्टैंडिंग. व्हाट दैट डज इज इट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द लाइफ in your own experience, in your own terms, in your own words. Yes. Right? So उसको पहले practice करो. See how it leads to you. जो भी आपने सीखा है अप्लाई करो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर आप उसकी ही बात करते हो, and then see if it helps you or not. Because otherwise आप खुद का भी नुकसान करवा रहे हो और दूसरा इंसान जो आपके पास
एडवाइस मांगने आ रहा है, अगर वो आपकी एडवाइस मानता है तो उसको भी नुकसान होने के चांसेस है। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आपको उस पर साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में बताता हूँ। डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं इसको। डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या कहता है कि बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग यू रीच अ स्टेज विच इज कॉल्ड माउंट स्टूपिड। जब जिसने कम पढ़ा होता, थोड़ा सा पढ़ा होता है, वो एक माउंट स्टूपिड में पहुंच जाता है बिकॉज उसको लगता है कि यार मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता। बट वो सेम ही बंदा ओवर टाइम जब व्हेन दैट पर्सन स्टार्ट्स लर्निंग मोर एंड मोर, वो उसकी सारी जो ईगो होती है, ईगो इन दैट टर्म्स, वो हम्बल हो जाता है बिकॉज दैट पर्सन रियलाइजेस कि यार देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, देर आर सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो। सो व्हेन यू बिगिन, start applying, start learning more, because after a while you realize there's a lot more to learn, and then maybe preach it, because advice देना, and you know lot of us have these double standards कि दूसरों को हम advice दे जाते हैं ये करना और सेम चीज़ होती है हमारे साथ, तो हम नहीं कर पाते। ये एक्चुअली मेरे साथ भी बहुत होता था। When I was younger सबको रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा हूँ परफेक्ट, बट जब खुद का रिलेशनशिप आया वही सेम गलतियां कर रहा हूँ, बट वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, एंड दैट वुड बी गुड। सो अब बात करते हैं स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आज सुबह एक्चुअली मैं जब इसके लिए प्रेप कर रहा था तब मैंने गूगल किया, मैंने कहा और कुछ एलिमेंट मिस ना हो जाए। कुछ एलिमेंट्स थे, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी हैं यहाँ पे, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है कि दैट दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पिरिचुअलिटी, बट आई टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट्स जो मेरे को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि दे आर ट्रू टू अभिनव ऑल्सो, ट्रू टू मी ऑल्सो। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट वन, मेडिटेशन। राइट, परफेक्ट। सो Abhinav, how do you think कि meditation helps us with spirituality? See again, वही spirituality की जब हम बात करते हैं, you can say meditation in itself is a spirituality, but again, see, meditation का main purpose आप किसी भी उससे जोड़ सकते हो। There's an action that you're trying to do, or an inaction when we talk about meditation. You can link it to anything, right? As we started की spirituality हमने शुरू किया था स्ट्रेस से भागने के लिए, एंगर मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए, फोकस ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सेम चीज़ मेडिटेशन हमारी करती है, हेल्प करती है। बट लेट्स रिमेंबर वन थिंग, what if we can actually be in a meditative state all the time? Yes. There's something known as like, I'm talking to you right now. Yes. My whole focus is on you. Yes. Of course, I've been doing meditation, sitting with my eyes closed and everything, and that is helping me to do that. Yes. But my main goal is this. I want to meditate in each and every moment. I have to live in a meditative state so I can bring all of my focus on what you are saying and what I am saying towards your response. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने, बिकॉज इन दी एंड वट एवर स्पिरिचुअल टेक्स्ट आई हैव रेड, उसमें होता है इन दी एंड द कंक्लूजन इज being present in the moment. Being present in the moment is essentially just enjoying the moment, because all of our problems are either linked to regrets of the past, or anxiousness in relation to future. Real life, real happiness is being in this moment. Yes, and see, at the end of the day, no one is actually touching you. We are not living in a world जहाँ पे हमारे ऊपर कोई शेर हमला कर रहा है, या कोई और ट्राइब से आके कोई हमें तीर कमान से मार रहा है। Nothing is really happening. We are two things. We are overstimulated because of the phones and the gadgets and the social media, or we are distracted because of that. और बहुत ज़्यादा fear, जो insecurity हमने अंदर, जो हम physiological, because हमारे body के अंदर वही responses stored है हमारे DNA के अंदर, तो जो insecurity भी हमें feel होती है, तो physiologically हमें वैसे ही feel होता है कि कोई attack कर रहा है। So meditation, it somehow helps you to take a break from those distractions, be fixed at a moment, and actually have a perspective as to what is exactly going on, why I'm feeling this way. Yes. It just helps you to connect with yourself in simple terms. This is perfect. My definition of meditation, why I do meditation, is scientific wo dunga. Why I started meditation. Now it's not scientific anymore. But it improves something called metacognition. Like Abhinav mentioned, it's your awareness. Awareness of your thoughts and your mood. जैसे अभिनव ने बताया कि बैठे बैठे हम मन में कोई भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ओवर टाइम जब आपकी खुद की अवेयरनेस बढ़ेगी, आप ये सेग्रीगेट कर पाओगे कि यार ये रैंडम थॉट है। एग्जैक्टली। ये मे बी कभी रियल लाइफ में हो भी ना। वरना 90% ऑफ अस आर एक्चुअली डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। मेरे साथ भी अभी भी हो जाती है कई बार कि यार बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि मेरी टीम वाले ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, इन एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं हो रहा होता। सो अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज सिंपल, सिंप्लिसिटी इज नॉट। ब्यूटीफुल। एंड एवरी डे गाइस वी हैव ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स. Wow. So your quality of your thoughts would dictate quality of your life, right? And you cannot stop them. Yes. Like they are just automatic. Yes. It depends on so much of stuff, the kind of people that you're living with, the kind of food that you eat. Yes.
आते रहते हैं जाते रहते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो वो एक जो बोलते होते हैं ना कई बार मेडिटेशन, लाइक यू विल बिकम थॉटलेस, डू मेडिटेशन. इट कैन नॉट हैपन, यू कैन नॉट बिकम थॉटलेस. यू कैन जस्ट understand कि whatever let you the thoughts be. yeah, let the thoughts be, and they are not actually coming into reality. जो भी आपके fears हैं, जो भी वो reality में exist नहीं कर रहे, वो आपके सिर्फ दिमाग में आपने उसकी बना ली है, एक image बना ली. So अभिनव, Instagram पे एक एक्चुअली पेज है जो मैं काफ़ी देखता हूँ. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें वो प्रूव करते हैं कि बेसिकली पीपल डोंट केयर. तो वो क्या करते हैं कि मैंने 2-3 रील्स देखी थी उनकी कि गाइस बाय द वे इफ आई फाइंड द नेम आई विल शेयर दैट बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. व्हाट दे एसेंशियली डू इज फेस्टिवल्स पे जाते हैं, लोगों से रैंडम चीज़ें बोलते हैं कि कैन आई वेयर योर हैट और स्टफ लाइक दैट. कई बार वो टेबल पे चढ़ के कुछ बोल देता है दैट आई एम स्टूपिड और समथिंग लाइक दैट. एंड उसके बाद वो उतर के कहता है कि यार वुड दीज पीपल इवन रिमेंबर फॉर 10 seconds और इवन 1 minute. हम बहुत बार बैठ के सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ जब बाहर जाऊँगा. अब मेरे को फॉर द फर्स्ट 18 years ऑफ माई लाइफ मेरे को ये था यार बाहर जाऊँगा लोग क्या सोचेंगे. बट ओवर टाइम आई हैव रियलाइज दैट पीपल डोंट केयर बिकॉज उनकी खुद की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा लाइफ में दैट यू नो दे डोंट हैव द टाइम. राइट. ऑल्सो एंड पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू would only give you good advices, wouldn't bitch about you or wouldn't care about you. In the end, people always criticize upward. कभी आप ये नहीं देखोगे कि कोई आपको बेटर बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है. Right. हमेशा people at the same or the level below you would be criticizing you. Right. So understand करो that you know बहुत basic चीज़ है ये तो, but you know people don't have the time. So stop over analyzing because you are the star of your life. True that. But you are not the star of everyone else's life. Right? आपकी कहानी के आप ही हीरो हैं रहेंगे. Yes, आप ही हो और हर किसी की कहानी के वो हीरो है. तो इसलिए टाइम नहीं है लोगों के पास. जैसे आप ओवरथिंक कर रहे हो बाकी भी ओवरथिंक कर रहे हैं. Don't try to be the hero of anyone else's life. अपनी लाइफ के हीरो रहो, उतना ही बहुत है. Yes. And अभिनव, मेडिटेशन पे कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, I think we've covered it beautifully. That is great. Next is yoga. योगा पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा because ये साइंटिफिकली पता है मेरे को, बाय एक्सपीरियंस नहीं पता ये चीज़. मेडिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ योगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योगा कैन हेल्प यू ऑब्वियसली स्टिमुलेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड. तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप काम फील कर सकते हो. बाय एक्सपीरियंस आपको बताएंगे अभिनव कि योगा कैसे हेल्प करती है जनरली भी एंड फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. चलो पहले हम बात करते हैं एज अ फिटनेस कोच. What all benefits that I saw, because that is our first responsibility. So I was in a phase जहाँ पे मुझे अपने ना मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट फील होने शुरू हो गए थे and I used to feel that my range of motion has decreased in a lot of exercises over a period of time. Now I used to do stretching, जो 10-15 मिनट की stretching होती है जिम के बाद cool down होता है, but still I had some want to become a little more flexible, to be able to execute certain movements properly. So one of my friends during the lockdown, he introduced me to yoga. And these are not scientific facts, these are the effects that I felt on my body. So I started doing it and I did quit weight training for a while and I just focused on doing yoga. Now yoga also has two forms. It has power yoga and then it has yin yoga, like which is the more of the, so power yoga is more of the vinyasa flows where you do rigorous body posture and body movements and you hold them for around 3 to 4 breaths and ये आपके हार्ट रेट इंक्रीज करता है और इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा आपका रीजन है. इसको हम यांग योगा भी कहते हैं, यिन एंड यांग अगर किसी ने सुना होगा. So this does that. Okay, so this also has benefits as it increases water in your muscles, increases the nutrients. ये भी flexibility में help करता है. But then is something known as yin yoga or the one that activates your parasympathetic nervous system or rest or digest system and it also helps you to sleep. इसमें you hold certain postures or stretches for about more than 1 minute, like 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, and there are also practices where they hold it for up to 10 minutes, like single pose. So physically, physiologically, of course, it will increase the flexibility, not just because you're stretching that particular muscle, but because you're becoming comfortable with that range of motion, right? Yes. Secondly, what eventually happens when you are doing it, as we said, meditation. 10 मिनट तक आप किसी भी difficult pose को hold करके रख रहे हो. It is a sort of meditation that is happening, right? You are in pain, you are in agony, but you're in that moment and you're holding on to it. Like there are a lot of times it will be like, छोड़ दे यार, मत कर यार, जाने देना, क्या कर रहा है, मतलब बहुत pain हो रही है. But then you're also helping or you're training your willpower
and you are becoming more focused. You are building that stamina of holding on to that pain. So that somehow helps you in your real life also. Like when you're holding on to that amount of pain, तो जब भी आपकी life में कोई difficult circumstance आता है, तो Indian yoga just sometimes somehow helps that. Again, because it is relaxing for your body. And something we know as connective tissue, fascia. It helps to stretch that connective tissue. Because mostly जो हम exercises करते हैं gym के अंदर, they don't have direct role in strengthening the connective tissue. That is more the skeletal muscle that they are strengthening. So when you do that yin yoga or the yoga, वो connective tissues आपके fascia होते हैं जो आपके muscle और skin के बीच में होते हैं और जो आपके ligaments और joints को healthy बनाते हैं, उसको भी एक healthy way में recover करने में और blood flow बढ़ाने में उसमें help करता है. So these are all the benefits that I experienced and from all the literature that I could find out on yoga. And of course, on top of that, it is calming. आपको नींद के अगर कोई issues आते हैं, I promise you start doing 15 minutes of yin yoga or these stretches before you go to bed. आपकी flexibility भी improve होगी and आपका focus बढ़ेगा, नींद बढ़िया आएगी. And of course, वो meditative aspect या spiritual aspect जो आपको feel होता है, आपकी breathing pattern, because there's this fact कि आपको breathing करनी है properly while doing those poses. You have to breathe in and you have to breathe out through your nose. So that just makes you a bit more attentive, more meditative, more focused, and kind of healthier in life. Right. इंटरेस्टिंग फ्रॉम व्हाट यू सेड, एक तो चीज़ मैंने डिड्यूस कर ली है कि जैसे आपने कहा कि पोजेस को होल्ड करना पड़ता है, तो बेसिकली आपका माइंड और बॉडी आर कमिंग इनटू अलाइनमेंट बिकॉज यू आर यूजिंग अ बॉडी ऑल्सो, बट यू आर यूजिंग योर माइंड टू कंट्रोल द बॉडी. सो ऑल्दो ये बाकी ट्रेनिंग फॉर्म्स में भी अप्लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल वेट ट्रेनिंग, डिटर्मिनेशन आ गई आपकी. One interesting thing before I forget. So I had this habit of reading literature about the kings and the warriors from the past. So one thing that I found कि yoga जो था बहुत ज़्यादा famous है अभी. Mostly it is considered as a feminine form of exercise. Mostly लड़कियाँ करती हैं. But what I found according to literature that warriors in our past, in the ancient times, before they started their training and after they ended their training, before going to a war, going to a battle, they had like good yoga sessions in the morning. Like that was a warrior's way to start the day. Like without yoga, they did not start or end their day. Yes, maybe because obviously stretching type or maybe because again आपके mind को focus तो करता ही है. Meditation आपके mind को तो focus करता ही है. Apart from that, balance improve होगा. एक और चीज़ mention करूँगा यहाँ पे, जैसे अभिनव ने मेंशन किया दैट देयर आर सर्टेन फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल पावर योगा, जिसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज होता है. दैट मींस आप स्ट्रेस्ड स्टेट में आते हो. इन सारे फॉर्म्स में दीज एक्सरसाइजेज आर कॉल्ड हॉर्मेटिक स्ट्रेसेस. दैट मींस ये आपका स्ट्रेस अभी बढ़ा तो रही है इन द मोमेंट, बट इन एक्चुअल वो फ्यूचर इवेंट्स के लिए आपकी स्ट्रेस रेजिलियंस को बेटर कर रही है. बिकॉज आपका ब्रेन कैन नॉट डिसाइफर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस. इसमें कार्डियो भी आता है. तो पावर योगा वगैरह अगर सिंपैथेटिक ड्राइव पे आप आ भी रहे हो, long term your body is learning how to deal with other forms of stress in a better manner because your body always adapts. So keeping that in mind, yoga is interesting. Good lesson for me. Next comes faith. First, Abhinav, I want to understand what your faith is. My faith, see, I'm somehow naturally थोड़ा सा question को change कर रहा हूँ. हाँ, sure. What is your faith and who do you pray? अगर आपके prayer में होता है, what happens? Okay, so honestly, as a kid, I was never very religious. Faith तब याद आती थी जब एग्जाम्स होते थे. भगवान बचा ले. We all have that faith कि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो कोई फेथ वूथ कोई नहीं, बाढ़ में गया सब कुछ. जब एग्जाम्स में जाना होता था तो भगवान जी आज पास करवा देना, ठीक है, मैं नारियल चढ़ा दूंगा, 100 रुपये चढ़ा दूंगा, बस इस तरह पास करा दो, मैं अगली बार पक्का पढ़ाई करूंगा, आज पास करा. तो एज अ किड दैट यूज्ड टू बी माई फेथ. I used to go to temples with my uncles and with my parents and stuff, but it was a very innocent kind of a visit. You know, Bhagwan ji hai hamare, Hanuman ji, Jai Hanuman ji. But then I started understanding कि सिर्फ एग्जाम से ऊपर भी बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस आएंगे जिसमें फेथ की ज़रूरत पड़ेगी. Like there are other experiences that are tougher than just the exams. So around 18 years of age, I came across the concept of the secret, right? The law of attraction. And earlier part of my 20s, I've lived my life
with the faith of law of attraction. So for me, honestly, faith is something, trust in a power beyond yourself, which gives you results both in positive and negative reaction or ways. Okay? So for example, अगर मैं law of attraction की बात करता हूँ, let's say law of attraction पढ़ा मैंने, उसमें कुछ steps लिखे हुए हैं, मैंने वो steps follow किए, मैंने एक goal set किया, वो goal achieve कर लिया, that means faith. Yes. राइट और मैंने उसमें कोई स्टेप मिस कर दिया, गोल नहीं अचीव हुआ, फेथ नहीं है उसमें. या हम कर्मा की बात करते हैं कई बार, तो मैंने कुछ गलत चीज़ें की, मेरा फेथ कर्मा में है, मैंने कुछ गलत चीज़ें मेरे से हो गई, उसका कुछ नेगेटिव आउटकम आ गया, मुझे उसका आउटकम मिल गया, कर्मा पे चला गया फेथ. राइट बट देन as you just mentioned that you started praying to Lord Shiva, so something happened in my life that my devotion or faith went to Lord Shiva. Right. And then I started, and that happened automatically. It was not something. Handshake time. Yeah, it was not something that I planned or I had in mind. My mother and father, they always used to be, थोड़ा सा ना नास्तिक बन रहा है तू, थोड़ा भगवान में विश्वास दिखा या कुछ दिखा. They didn't do it very aggressively any time, but they were just concerned कि मैं भगवान में नहीं विश्वास करता हूँ. और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि I'm not religious, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता या मुझे faith नहीं है, but मेरा faith जो होता था वो secret या law of attraction में होता. But that shifted somehow towards Lord Shiva, and I have no words as to how that happened, why that happened. But again, coming to the practicality of it, faith again for me, if I'm praying to Lord Shiva, it is if I'm following certain footsteps of Shiva or certain teachings that he has given or certain ways that he has mentioned about living life, doing your actions, if I'm getting a positive result out of it, right? Yes. Then I have faith in it. So mostly if you are putting your faith in, let's say, Jesus, Allah, Shiva, Hanuman, Krishna, it basically extends to कि आपने कुछ गोल सेट किया हुआ है, आपने उस चीज़ के ऊपर फेथ रखा हुआ है, आपका गोल अचीव हो जाता है, उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपका फेथ उधर ज़्यादा हो जाता है. यस, जैसे बड़ी अच्छी चीज़ आपने मेंशन करी कि faith can be anything. Yes. And there are these people that is like lot of us जो हम सोचते हैं कि यार हमारा रिलीजन या हमारा फेथ सही है, बाकी सबका गलत है. Right. अगर आप इस प्री कंसीव नोशन के साथ हो तो बेसिकली आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी का इस फेथ वाले मामले में आपको कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज इन द एंड ऑल गॉड्स आर सेइंग द सेम थिंग इन देयर ओन वे. Right. All rituals are happening in their own way. Right. And there's no religion or no faith actual में teaches कि यार others are worse, you are better. Exactly. And there was a time जब faith rituals में होता था, gods में नहीं. Yes. So I was reading this book called Hinduism. Yes. And I think I got inspired from one of the books that you had on Vedas. Yes. So, but उसके आसपास वो same author से Hinduism की, तो I was reading it. So उसमें क्या था कि पहले जो rituals होते थे, that was the god or the faith. People believed more in rituals, right? And that is why we say कि वो morning routines होनी ज़रूरी है, वो rituals होने ज़रूरी है, because those are more important. And then it shifted to मूर्ति पूजा, Yes. as they say. And उसके बाद क्या होगी, 33 gods होते थे उससे पहले, and then 33 करोड़ gods हो गए. 33 करोड़. Can you believe it? The faith, it divided in such segments कि 33 करोड़ gods हो गए. Like the number of, like the change, the number of figures you have for faith, it changed. And it was more like puja, मूर्ति पूजा पे ज़्यादा फोकस चला गया rather than ritual. So this was one interesting fact that I just wanted to dive in and discuss. 33 करोड़. 33 करोड़ gods, 33 करोड़. नहीं, पर अब मेरी एक इंटरप्रिटेशन है कि why there should be not just one religion. Because सारे जो religions है, जैसे मैंने काफ़ी लॉर्ड शिवा और विष्णु के बारे में पढ़ा है, लॉर्ड विष्णु के बारे में, स्टोरीज होती है जिसको हम इंटरप्रेट करके समझ सकते हैं कि यार करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल रामायण, हमें सबको पता है दैट यू नो इन द एंड यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर समथिंग गुड, यू हैव टू बी ऑन द राइट पाथ, राइट. अब मल्टीपल, अब मैं 33 करोड़ होने का तो लॉजिक मुझे नहीं समझ आता, बट मल्टीपल रिलीजन्स होने का ये फायदा कि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. हर किसी की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोरीज इज डिफरेंट. मे बी दिस वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी might not feel good for you, but maybe some other way of the same story, same lesson might, you know, feel true to you. Yes. Right? So that's why having multiple religions can actually be a good thing till the time they are not being interpreted in the wrong way. Right. लोग क्या करते हैं कि हमारा अच्छा है और दूसरों को नीचे दिखाने लग जाते हैं. Right.
आज ही सुबह एक्चुअली गैरी वी का मैं पोस्ट देख रहा था कि देर आर टू वेज ऑफ बिल्डिंग द बिगेस्ट बिल्डिंग इन टाउन. नंबर वन इज build the best building. The other one is tear other person's building down. And 90% of the people are doing the second thing, right? And anyone who's propagating that directly or indirectly has some ulterior motives. Yes, very beautifully explained, Yash. And at the end of the day, like this is again our personal beliefs, personal opinions, because we want everyone to be happy. Yeah, in the end, yes. At the end, we want everyone to be happy, to be healthy, to be fit, to be able to enjoy this life. Does not matter what religion you are, what sex you are, what age you are. This is our only method. And that's why they say being human is better, like is the more priority, as a bigger priority than being of any religion. And this is something that we all need to understand. कोई नहीं फर्क पड़ता कौन से रिलीजन से हो नहीं हो, सेम स्किन है, चाकू लगेगा, गोली लगेगी, उतना ही खून निकलेगा, ठीक है, उतना ही प्यार फील होगा. Everyone's gonna die someday. Everyone's gonna die, and we are going to leave this planet, same way. So rather than having that division, we just need to have empathy more towards each other and see how we can create more joyful moments with each other. थोड़ा ज़्यादा वो होगी. नहीं, this is great. हम एक्चुअली इसके बाद empathy की बात करने वाले थे, but before that मैं एक और interpretation बताता हूँ कि why religion and faith is important. Guys, future is uncertain. Chances are day in and day out we see mishaps, especially COVID के बाद mishaps इतने होते हैं. Chances are maybe something happens and you are not even alive the next day, right? Having faith tells you that there's a higher power who's looking over you and everything would be all right. Another thing is a lot of people are scared of death. Right? Everyone's gonna die someday, but we don't know the date. Right? So the concept of whole religion and afterlife actually keeps people sane and keeps them, एक तरह से उनको बेसिकली हमें बिलीफ आ जाती है कि यार इवन इफ वी लूज समवन फ्रॉम आवर लाइफ, आवर लव्ड वन, दे आर इन अ बेटर प्लेस. ऐसा नहीं लगता कि खत्म ही हो गया. सो बेसिकली डेथ से जो आपको डर लगता है, यस डेथ इज इनएविटेबल, बट अगेन देयर इज अ हायर पावर लुकिंग ओवर अस, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट अगेन देयर इज अ हायर पावर लुकिंग ओवर अस. सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील कि फेथ इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ केसेस में जिन्होंने अपने क्लोज वंस की डेथ देखी है उनके लिए काफ़ी हार्श हो सकता है, स्पेशली व्हेन children lose their parents as we grow older. That's going to happen someday, right? So having faith in even stuff like afterlife, जो बड़ी non-scientific बात लगे, can actually help us bear such times. At the end of the day, whatever helps you to live this life more peacefully, joyfully, beautifully, and in a peaceful manner, Definitely. Go for it. Definitely. In the end, says everyone has, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि सबकी अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव डेफिनेशन है. आज का पूरा सब्जेक्टिव है. यस, ये पूरा ही सब्जेक्टिव है. एंड ग्रेट टू सी दैट हमारी काफी चीजें, एक्चुअली एवरीथिंग सो फार हैज बीन इन सिंक, व्हिच इज ग्रेट. नेक्स्ट इज, जैसे अभी फेथ की बात करी, प्रेयर, और आपने जैसे रिचुअल्स की बात करी, डू यू बिलीव इन द रिचुअल्स? Of course, like firstly, do you want me to talk about prayer first or the rituals? I mean, for me both go hand in hand. See, prayer मैं बताता हूँ. प्रेयर रूटीन बताओ पहले. मेरा प्रेयर रूटीन बहुत बच्चों वाला होता है. भगवान जी आज का दिन अच्छा कर देना, ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक रखना, मेरे आसपास के सभी माँ बाप की हेल्थ ठीक रखना, मेरे दोस्तों की हेल्थ ठीक रखना, मेरी टीम की हेल्थ ठीक रखना, मेरा काम अच्छा हो, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए मुझे माफ़ कर देना, मुझे एक अच्छे राह पे लेके जाना. दिस इज द ओनली प्रेयर दैट आई डू. नथिंग मोर देन दैट. कभी बहुत ज़्यादा फंसा हो तो भगवान जी प्लीज़ निकाल लो, अगली बार ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है. इस तरह की प्रेयर होती है एज फार एज द रिचुअल्स आर कंसर्न. एंड दिस हैज़ बीन the most innocent way that I've been praying. Of course, when it comes to doing certain pujas or mantras on Diwali, और अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं, तो वो of course we do it because that is a ritual that we do, and वो कहते हैं देवी देवताओं को बुलाना. I do it because I find it peaceful, I find it good, and I find it that I am a part of that culture or whatever religion that I belong to. Talking about prayer के बाद you saw ritual. Now when we talk about the rituals, I think a lot of things that we as fitness coaches talk about, having those morning routines, having those evening routines, nighttime routines, having those fitness routines. For me, those are rituals in simple manners. So this is a basic way that I look at rituals and prayer. लिटरली मेरा भी एग्जैक्टली सेम है प्रेयर में. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, एग्जैक्टली वॉट एवर यू सेड, कॉपी पेस्ट, प्लस थैंकिंग द गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग मी अनदर डे इन लाइफ. एंड बिकॉज इन द एंड
both of us are actually leading great lives, Right. and this is something which people dream of, Right. and that's something which I realize, and I just thank God every day. Start with that, and then I say please take care of everything else. And that helps a lot. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा. I got this from अपार शक्ति खुराना. So कुछ हमारी कुछ प्रेयर से रिलेटेड बात हो रही थी, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग. कहता ब्रो मेरी सिंपल सी प्रेयर है, भगवान सब कुछ देख लेना, फ्यूचर में अच्छा करना, और अगर आप अच्छा ना करो, please give me the power to bear that. Right. It was such profound thing for me, because हमेशा हम प्रेयर करते हैं, हम कहते हैं यार सिर्फ अच्छा, right? But when he mentioned कि यार अच्छा अगर आप ना करो, just give me the power कि I am able to bear that. Right. And that was like enlightening for me, and that has stayed with me till now. Beautiful. कई बार ज़्यादा फटी हो तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं. It's great. एक बार actually बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. तो there's a very good friend of mine जो हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ता था. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हम बाली में थे, so there was this friend of mine जो हनुमान चालीसा में काफ़ी बिलीव करता है. तो उस टाइम मैं मेडिटेट करता था रेगुलरली. तो वो कहता ब्रो हनुमान चालीसा भी टाइप ऑफ मेडिटेशन है. तो मेरे घर पे सारे हनुमान जी को मानते हैं, तो मैं कहा यार सब करते हैं ठीक है. बट उधर से जब वापस आने लगे, हमें लगने लग गया कि चीज़ें पैरानॉर्मल थी. अब वो वहम था या बेसिकली सोबर नहीं थे, उस चक्कर में था. तो जब वापस आए, दिल्ली में आए, हम इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना. तो उस दिन मैं स्पेशली उसने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ के, उस दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया. एंड दैट इज द थिंग विच लेड मी टू स्लीपिंग वेल ऑन दैट नाइट. Again, faith. Yes. Faith. You put your faith into something, it responded back. Yes. You just prayed to an energy somewhere. I don't know if it exists Yes. or not. I would say yes, it exists. नहीं तो जुत्ती चप्पल मारोगे मेरे. But it does exist. But it responded. That's the beauty of faith. Yes, but faith का एक और भी लॉजिक है. Faith leads to belief, belief leads to action, action leads to results. Right? अगर आप बिलीव, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप बिलीव करते हो कि यार मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, Right. ना आपकी थॉट्स अलाइन करेंगी, ना एक्शंस करेंगे अलाइन. एक्शंस नहीं अलाइन करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? एंड यस ब्यूटीफुल. लगी अब फेथ है, लगो एक्शन से बैकअप करना है. लेकिन उसकी एक अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे जाते हैं. यू हैव फेथ दैट यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, बट अगर आप बेड पे बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वो फेथ काम नहीं करेगी. यू हैव टू पुट इन द एक्शन ऑल्सो फॉर दैट. This is a great point actually. भगवान के अभिनव ने बोला, यश ने बोला मंदिर में जाके भगवान जी मुझे ये करो दो, ये तो हो जाएगा. हनुमान चालीसा पढ़ लिया, काम भी करना है भाई. Yes, guys, by the way, हमें गेम्स या नेटफ्लिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, बट फोकस ऑन एक्शंस टुवर्ड्स योर गोल्स आल्सो, एंड दैट वुड हेल्प. नेक्स्ट आ जाता है एम्पैथी. ब्यूटीफुल. राइट. सो एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा एक्चुअली. मैं एम्पैथी से पहले स्टार्ट करें. प्रेयर्स और रिचुअल्स, काफ़ी लोग होते हैं जो बेसिकली प्रेयर्स और रिचुअल्स में ऑन पॉइंट है, बाकी कुछ भी ऑन पॉइंट नहीं है. एक्शंस ऑन पॉइंट नहीं है, प्रेयर चल रही है, एक्शन ऑन पॉइंट नहीं है. पंडित जी ने कह दिया ये करना है, ये कर लिया है, बट एक्शंस, थॉट्स, कुछ भी एक्शन ऑन पॉइंट नहीं है. वो मुझे पर्सनली लगता है कि काफ़ी रैंडम, मतलब इट्स अ पॉइंटलेस थिंग टू डू. ऑफ कोर्स लाइक कुछ भी चाहते हो लाइफ में, छोटी चीज़ भी यू हैव टू पुट इन. Yes. यू हैव टू मेक सम. हम बात कर रहे हैं, ये कुछ इनपुट जा रहा है इधर से इस माइक में, तभी कुछ आउटपुट ये देख पाएंगे हमारी ऑडियंस. Yes. राइट. अगर कुछ इनपुट ही नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द आउटपुट? डेफिनेटली. सो ब्यूटीफुल इज सेड. डेफिनेटली. नेक्स्ट आ गई एम्पैथी. एम्पैथी की बात करते हैं. अभी तक जो हमने मेन बात करी है माइंड एंड बॉडी की है. एम्पैथी है जो सोल वाली बात पे ले जाता है. एम्पैथी इज एसेंशियली जस्ट फीलिंग व्हाट अदर्स कैन फील. राइट. व्हाट अदर्स कैन फील एंड व्हाट अदर्स हैव फेल्ट. एम्पैथी की स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ बता देता हूँ. अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है इफ़ यू believe in human relationships. Any relationships, be it with your partner, be it with your parents, be it with your colleagues, be it with your anybody, literally anybody, right? So empathy, if you can feel what others can feel, that can change the game. Right. And when we talk about empathy, as children, if we remember, like if I go back to the earliest of my memories sometime, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एम्पैथी होती है. We don't have that view of the world as we are separate and our friend is separate or our mother is separate or father is separate. छोटे होते हम कितने क्यूट होते थे, इनोसेंट होते, किसी को चोट लगी, तेरे को चोट लग गई है, वो आ जा. We used to be really concerned about it, and then we get into that rut of competing with others, and we have that mindset. वो हमारी ego एक बनती है जहाँ पे हमारी जो एक diversion या let's say हम डिफरेंट हो जाते हैं दूसरे ह्यूमन से, एंड दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ओवर टाइम. बट अगेन द स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट, एज आई टोल्ड, द मोर you become mature, the more experienced you become in life, the more aware you become, you realize that there are certain sufferings that exist that you go through.
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कभी घुटने में चोट लगी है एंड अगर आपके कभी घुटने में अगर चोट लगती है तो मेरे को पता है वो फीलिंग कैसी होगी, राइट? सो आई कैन एम्पैथाइज विद यू, राइट? एंड this is something that becomes very beautiful. Why? Because you can actually help the other person. You can give those energies to the other persons where they get a chance to heal from that. They know that they are not alone. Yes. Right? So that is another thing that empathy does for you. Yes, that is great. And again, आप बाकियों का पेन फील कर पाओगे तो obviously you'll be nicer to people. Yes. Guys, a simple rule here: everyone is going through a lot of stuff, so be nice to everybody. Yes, yes. Especially social media के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है And nice से भी ज़्यादा kind हो जाओ सबके लिए. Yes, kind हो जाओ. And if someone is hating on you for no reason, social media पे बहुत ज़्यादा होता है ये. Just ignore them because they themselves are dealing with so many problems कि उनको this petty thing is giving them happiness in their life. Yes. Right? So empathy is very important and it's one of my favorite life skills. I've seen so many great people who are great in everything, but they just can't understand the other side of the story, other person's story, right. which makes their life a little difficult. True that. इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बात करनी चाहूँगा. पहला है शार्डेन फ्रॉइडर. सो स्पेलिंग अलग है, मैंने यहाँ स्पेशली प्रोनाउंसिएशन लिखी है. फीलिंग जॉय इन समवन्स सॉरो. This is 90% of people. A lot of times we end up believing that someone else's win is our loss. 3 Idiots वाला concept क्या? Yes, बिल्कुल. कि लोगों को लगता है कि यार बाकी लोग अगर लूज कर रहे हैं तो ये वही बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल हो गया बेसिकली. गाइस, सबसे अपनी बिल्डिंग सबसे ऊपर बना लो, दूसरों की बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है. एंड ये गाइस, that's 90% of the people. And if you ever feel jealousy for anyone winning, first thing which you should do is ask yourself, what is missing in me? What is missing in my actions? And that would help. इसका opposite एक concept होता है जिसको कहते हैं mid Friday. That means किसी की happiness में खुश होना, right? Finding peace and joy in someone else's happiness or someone else's win. That can change the game. And ये मैं बताता हूँ, concept में सीखा, word तो मैं भी recently सीखा हूँ. रॉबर्ट ग्रीन की book read कर रहा था, Laws of Human Nature. बट ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ को इंसिडेंट से सीखा हूँ बिकॉज इन अ वे फॉर बोथ ऑफ अस एक्चुअली वी आर इन दिस इंडस्ट्री वेयर इफ आवर क्लाइंट्स आर विनिंग वी आर विनिंग, राइट? सो इफ वी सी देम विन आवर डे ऑल्सो इम्प्रूव्स, वी ऑल्सो गेट हैप्पी. सो हम ऑटोमेटिकली ये चीज सीख जाते हैं कि यार we are winning from making others win in a way, right? Coaching is all about that. So that actually automatically teaches us this skill, right? And guys, ये skill hard to learn है. एक और भी चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि I am perfect in this or maybe Abhinav is perfect in this, but just being aware. If you're feeling jealous of someone, if you are, मेरा एक सीधा सा रूल, अगर मैं किसी के बारे में कुछ मेरे को लगता है कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता है, कुछ भी ऐसा सी थॉट आती है, नेगेटिव थॉट आती है किसी के लिए, आई जस्ट आस्क माई सेल्फ वन क्वेश्चन: इज दिस पर्सन अबव मी? इज दिस पर्सन डूइंग एनीथिंग बेटर देन मी इन हिज लाइफ? द आंसर इज ऑलवेज यस, because in the end it's just your brain's defense mechanism to make yourself feel better, right? Instead, take inspiration from people. Abhinav can also win, I can also win, you can also win, and all of us can win together. Beautiful. Success is like sunlight. Quote yaad aa gaya. Success is like sunlight. It's available for everyone. Just be ready to go out and sit in the sun every day. Right. Vitamin D भी मिल जाएगा आपको इस चक्कर में. And that's what. It's all about energy, when we say jealousy, it's kind of a very uncomfortable feeling that you get when you see someone succeeding more than you, has more money, has got married or whatever it is. Energy goes where your focus, energy flows where your focus goes. अगर आपकी energy सारी इस thought पे जा रही है, it's about the thought. Yes. आपका थॉट जा रहा है कि ये बंदा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? इसकी इतनी अच्छी लाइफ है, मेरी अच्छी लाइफ नहीं है, ये पक्का कुछ गड़बड़ कर रहा है. जस्ट सी वेयर दैट एनर्जी इज गोइंग. इज दैट रियली अ गुड एनर्जी फॉर यू? इज दैट रियली समथिंग दैट विल मेक द डे मोर प्रोडक्टिव फॉर यू, और इज इट टेकिंग यू इनटू अ डायमेंशन जहाँ पे आप फ्रीज हो जाओगे एंड दैट चांस ऑफ लर्निंग फ्रॉम द अदर पर्सन एंड इम्प्रूविंग योर ओन लाइफ, क्या वो लूज कर जाओगे, या आप उस एनर्जी को दूसरी तरफ लेके जा सकते हो. अरे वाह यार, क्या बंदा है, लाइक व्हाट अ लाइफ एंड व्हाट अ लाइफ हैज ही क्रिएटेड. लेट मी जस्ट लर्न फ्रॉम हिम, लेट मी जस्ट गेट इन टच विद हिम एंड लेट मी सी हाउ आई कैन ब्रिंग दोज चेंजेस इन माई लाइफ. नाउ सी योर एनर्जी, योर फोकस इज गोइंग ऑन द आउटकम ऑफ मेकिंग योर लाइफ बेटर,
Yes. आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करो, आप ऐड कर दोगे अपनी लाइफ के अंदर. सो हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट या स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ व्हेन यू फील, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज वी हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वे जहाँ पे हमें compete करना है सबके साथ. स्कूल में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना है. दूसरा देखो शर्मा जी का लड़का सेकंड फर्स्ट आ रहा है, तू आप second आ गए. I remember man, I used to come first, and just once I started focusing more on sports and I came fourth, and my parents used to be, देख ये अभिनव ने इनडायरेक्टली फ्लेक्स किया है कि स्कूल में भी फर्स्ट. I flex every day. I'm valedictorian, bro. I always flex in the school. Continue. But anyways, so that's been my earliest memory as to how I can relate to this particular concept. And मुझे कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन सेकंड आता है कौन थर्ड आता है. जिस दिन मैं फोर्थ आया और मेरा फोकस was taken कि ये फलाना बंदा फर्स्ट आ रहा है, तू फोर्थ कैसे आ रहा है, I started feeling that kind of a tiff between me and that person who was coming ahead of me. And it took me years to wash all that away or heal all that away and understand कि I could have just learned from that person and how is he succeeding, and that becomes so easy, and that makes your life so easy. Also, the competition is only in our head. It doesn't matter because in the end, everyone has different definition of how the life works. Everyone has a different definition of happiness also. तो compete करने का क्या फायदा है? एक simple example देता हूँ. For example, मैं इनको Abhinav, if I want to improve my content, I learn it from you because maybe it's your chapter 14. It's chapter 1 for me, right? So सीधी सी बात है that आपने बड़े अच्छे तरीके से sum up किया कि take inspiration. एंड जिस दिन आप अपना माइंड खोल दोगे उस चीज़ पे यू विल बी हैप्पियर. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठे बैठे सोच भी रहा हूँ कि यार वो अभिनव का कंटेंट बड़ा अच्छा है, अभिनव ग्रोज सो फास्ट, मूड किसका खराब हुआ? आप ही का हो रहा है. हाँ एग्जैक्टली, खुद ही. दैट इज द इशू. सो इफ यू थिंक नेगेटिव, your mood would be negative, your actions would be negative, and results would be negative. वो hate और jealousy की बात करते थे ना, hating और mid Friday सीखो, mid Friday. ये तो इतने complicated words होते हैं, but simple सी चीज वो कहते हैं ना कि hate हो या jealousy हो, it is like drinking poison yourself and hoping the other person would die. Yes. Right. What a great. This is a great. Just see how funny you are right now, but in a negative way for yourself. So just have that perspective about this is a next great time. Quote. Yeah, next time use करूँगा multiple जगहों पे. Drinking poison yourself. Next time इसको याद रखना. Yes, this is a great. बहुत एकदम ही very apt. So next comes karma. Right. Karma आपका क्या? What is your logic with karma? It's the same as thing as faith. Again, for me, it's a simple thing. Input will create the output. Yes. Now, we might have the best equipment right now with us. Right now, we've got the best mic that is available for podcasting. We have the best cameras that are available. And we are giving the best that we can right now. So, ये हमारी input आ रही है. तो output भी उसको justify कर जाएगी. हाँ जी. Now, let's say we start from a substandard camera, a substandard microphone, तो output भी वैसा ही आएगा. Right? Yes. So, the same thing goes with the karma. आप जो put in कर रहे हो, at the end of the day, there are a lot of beliefs कि पिछले कर्मों के, पिछले जन्मों के कर्म आ रहे हैं, ये आ रहा है. I believe जो या इस जन्म में है, इसी में मिलना है. Okay? Take that spiritual touch. Great, because वरना तो random सी बात हो जाती है. You are putting every moment, you are releasing an energy, you are putting in energy, you are absorbing energy, you are exchanging energies. Energy cannot be created or destroyed. It can only be given another form. Okay? So whatever form you are giving, at the end of the है क्या है ये? यूनिवर्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं. इट्स जस्ट स्पेस. स्पेस में हम तुम स्पेस में बैठे हैं, ये टेबल स्पेस में है, तो स्पेस है, यूनिवर्स है. हमने कोई एनर्जी डाली, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाना है. दैट इज सिंपल. दैट इज कर्मा. कर्मा इज अ bitch, whatever you want to call, say. That is what goes around. What goes around comes around. Whatever it is a simple basic physics के वे में अगर देखना शुरू करो, but whatever input you are putting, expect the same output. Don't be surprised with it. Right? And that's why I say, अब इसको कर्मा को यूज भी किया गया है रिलीजन ने काफी ज्यादा, so that people are a little scared while creating or committing certain crimes, या कुछ गलत चीजें करना चाहें किसी के साथ, किसी के थप्पड़ मारना है, किसी का गला घोट देना है, किसी को मार देना है. Such a negative thought. But anyways, उससे भी थोड़ा डर के रहे. So these are few of the concepts that I have around karma. This is great and very similar to me. And मेरे को बस नहीं लगता है जो ये लोग कहते हैं यार पिछले जन्म के कर्म हो गए, it's simply lack of ownership. Right. आप अपने इस जन्म के कर्मों को ओनरशिप नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्या गलत कर रहे हो.
ऑल्दो आई पर्सनली डोंट बिलीव कि यार, चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल आज आपके साथ कुछ रैंडमली गलत हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल चलो बीमार हो जाते हो, बुखार हो जाता है आपको. वुड यू फील कि ये कर्मा की वजह से हो रहा है? मतलब जनरली थॉट क्या था ये? तो I'll tell you. So अगर मैं बहुत पहले होता then I would have tried to find out a reason as to मैं बीमार क्यों हो गया हूँ, मेरी क्या गलती है, right? But now what has happened is I have understood that we humans, we ascend towards spirituality, yeah, we ascend in various phases. So first phase is the life is happening to us. Yes. In the way ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ हुई है, yes मैंने की है, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, right? And then life is happening for us. Yes. It is happening for us. Yes. And then we become a little more compassionate and empathic towards life. Then life happens through us. Yes. Life is just happening through me. I'm just a medium. There's God, there's universe. There's some energy coming. I'm responding in a certain way. Even if I'm swinging my hands, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और करवा रहा है, right? And then there's a stage which you gradually realize you're going through is that life is just happening. Yes. That's the answer. Like मैं बीमार हो गया, life just happened, हो गया बीमार. Because now I can find a positive. एक तो है मैं कुड़ूंगा, ये मैं बीमार हो गया, कुछ गलत हो गया मेरे से, क्यों हो रहा है, मेरा काम हो गया. And then it's like I'm draining myself more when I should be more positive and I should be more faithful. But now I can have perspective. Oh my God, मैं बीमार हो गया जबकि मेरा काम भी पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ. Probably universe prevented something big. Yes. कोई कुछ गलत बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी मेरे साथ, वो रोक दी. You know, even if I'm stuck in traffic या मेरा टायर पंचर हो गया, probably there was a probability कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरा शायद एक्सीडेंट हो जाता, वो रुक गया है. So this is how I interpret this particular concept. इसे guys साइकोलॉजी में रीफ्रेमिंग कहते हैं. This is a great thing कि किसी भी सिचुएशन को आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख सकते हो. पॉजिटिव से देखना है पॉजिटिव से देख लो, नेगेटिव से देखना है नेगेटिव से देख लो. Energy, wherever you put your energy, just find a way where that energy can grow and give you a positive frame of mind so that you can have some positive experience even if you are hurt, even if you are in pain, even if you are sick. Yes. Right? That will heal you faster. Definitely. And इसका हैक बता देता हूँ, ग्रैटिट्यूड रूटीन. रोज सुबह उठते हो, जस्ट थैंक गॉड फॉर 5 थिंग्स. मन नहीं भी कर रहा, मूड अच्छा नहीं है तो भी थैंक करो. इफ यू कैन डू दैट इन अ रिटन मैनर दैट्स इवन बेटर, बिकॉज उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है. और रात को सोने से पहले 3 to 5 थिंग्स के लिए गॉड को थैंक यू करो. सिंपल एग्जाम्पल वुड बी फॉर मी टुनाइट माइट बी थैंक गॉड, इतना अच्छा पॉडकास्ट गया, इतना लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. So Yash, because you have much better hold on the scientific terms, and a lot of our audience might not know about the word neuroplasticity, and I'm sure that we've used that before in our podcast and आगे भी use करेंगे. So just give a brief description about as to what neuroplasticity is really. So our brain is plastic in nature. So what does that mean? That हमारा ब्रेन फिजिकली स्ट्रक्चर में चेंज करता रहता है एज वी लर्न न्यू थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. When we write things down, our learning is better. So neuroplasticity better होती है. So for example, अगर आप gratitude के चक्कर में write भी कर रहे हो, starting में this would not come to you naturally. After a few weeks and months, ये natural हो जाएगा process. ये आपकी habit बन जाएगी. Automatic hack है to put yourself in a positive mood in the morning, at night. जैसे आपने frame of reference का example दिया कि कुछ खराब भी होता है, आप ये सोचते हो कि क्या पता worst चीज़ टल गई हो, राइट? उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप खुद को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लूप में डाल रहे हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे एग्जांपल दिया, सिंपली आपके साथ क्या है, अब आपकी ये हैबिट, आपको जान के सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इफ यू स्टार्ट विद अ ग्रैटिट्यूड रूटीन, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट राइट नाउ, and if you keep on writing things down, automatically that would become a habit, and automatically your day would start on a positive note. Bad things would end in a positive note कि यार things could have been worse, and day would end with a positive note again, right? बहुत ऐसे नहीं लिखना तो don't write, but start thinking of these things 3 times. 3 चीजें सोचो सिर्फ. What are you grateful for? For example, tonight I would be just grateful for this podcast. I'll be grateful for maybe good food if I get good food, right? तो उसमें झूठ भी नहीं बनाना है, ऐसा झूठ नहीं बनाना है. I'm grateful for a great family and stuff like that. Right. And is it the same as we say practice till you succeed? Is it like similar to practicing something, practicing a form of faith, practicing gratitude, or is it something else? Like practicing ka matlab, let's say for example, I'm an athlete who wants to take part in Olympics and I want to win that 100-meter dash. I start and my time is let's say 13 seconds. I want to bring it down to 10. And then I keep on doing it and then my neurons change. Of course, my musculature is also changing. Is it something similar or is it completely different to practicing something? Gratitude improvement?
just neuroplasticity yes. versus practicing something over and over again. ठीक है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, उसमें क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन में एंग्रेन हो रही है चीज़, राइट. आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो वर्सेज राइटिंग, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ. राइटिंग से क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस बेटर हो जाएगा. जस्ट प्रैक्टिसिंग वुड ऑल्सो वर्क. मैं अपना बता देता हूँ, मैं नहीं लिखता, राइट. आई डोंट राइट स्टफ, ऑल्दो आई लाइक टाइपिंग, एंड writing also makes you think, right? So for example, if I'm writing something positive, that would also make me think in a positive manner. Maybe मेरे और positive ideas आ जाए. Also practice till the time you get better. का simple सा example दे देता हूँ. जिम जाते हो, पहले दिन बारबल भी नहीं उठता है, थोड़े टाइम बाद वो भी उठने लग जाता है, फिर 100 kg पे पहुंच जाते हो. So just like that, right? Over time, this would keep on getting better, and this would get very automatic. Somewhere they intersect. Yes. They do Starting intersect. में it might be uncomfortable. Starting में you might feel कि क्या यार, ये तो random है, मेरा mood तो खराब है फिर भी. But still do that. This would change the game. मैं अपने भी बता देता हूँ कैसे start हुआ था ये. I learned about it. इस पे researches भी हैं. I started advising others, right? So फिर एक बार मैंने कहा खुद भी try कर लेते हैं फिर. राइट, वो थोड़ी प्रैक्टिस विदाउट प्रीचिंग वाली बात होगी. आई ओनली यूज्ड टू एडवाइस दिस टू विमेन, बिकॉज मेरे को लगता था यार ये इट्स नॉट अ थिंग फॉर गाइज, राइट. स्टडीज पढ़ी थी, साइंस थी, तो ऑब्वियसली, एंड दैट वर्कड फॉर विमेन. बट देन आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई माई सेल्फ, राइट. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग इट माई सेल्फ, इट इज ग्रेट, बिकॉज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मोड में आ जाते हो, एंड दैट चेंजेस द गेम. परफेक्ट. कर्मा को भी बस सम अप करते हैं. इसमें मैं अपनी कर्मा की डेफिनेशन बता देता हूँ. Guys, in the end, whenever we make a mistake, we just hope कि यार बाकियों को ना पता लग जाए. मैं कुछ आपके साथ गलत करूं, मुझे ये लगता है यार कभी अभिनव को ना पता लग जाए. That is totally fine. But who do you spend the maximum time with? Yourselves. And human memory never fades away. Deep inside, you know who you are, what you think, what you do. इस मेमोरी के साथ अब now every action of yours is a vote towards the kind of person you want to be. अब यहाँ से या तो आप अपने सारे एक्शंस ठीक कर लो और अपनी मेमोरी में पॉजिटिव मेमोरीज, पॉजिटिव थॉट्स डाल दो, एंड पॉजिटिव. अनदर थिंग इज दैट इफ यू कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, डीप इनसाइड यू नो यू आर अ ग्रेट पर्सन. यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक दैट, राइट. सो कीप इन माइंड दैट ह्यूमन मेमोरी नेवर गोज अवे. गलत कर रहे हो वो भी आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा. आज मैं आपके साथ कुछ गलत करता हूँ, इन अ वे जब भी मेरे दिमाग में अभिनव नाम आएगा, वो दैट थिंग वुड रिमेन इन माई माइंड, राइट. So, and these memories remain with us throughout our lives, right? Unless आप ज़्यादा जल्दी चीज़ें भूल जाते हो. Deep inside ये सारी चीज़ें stored है, right? My belief is that if I want to live a happy life in future, my karma should be good to make sure that when I lead into my future life, deep inside I know that what kind of person I am. And it is really good for your mental health also, as you beautifully said, कि the kind of person you want to become, there's a memory that is inside you, जिसको आप सिखा रहे हो. जब भी आप किसी को झूठ बोलते हो, आपको लगता है आप दूसरे इंसान से झूठ बोल रहे हो, बट उसके लिए तो सच है वो. Yes. आप खुद को झूठ बोल रहे हो. और कई बार मैंने ये फील किया है खुद के साथ भी, एज अ किड, व्हेन वी ऑल लाई, वी डू लाई. You actually start experiencing कि आप किसी झूठ को इतना बोल चुके हो कि आपने उसको सच मान लिया है. 100%. And then there's a barrier that you've put on yourself, and that we as fitness coaches, I think we have seen this in our clients. खुद ही अपने आप को कुछ उन्होंने गूगल पे पढ़ लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट. एंड व्हेन इट वाज नॉट देयर, बिकॉज गूगल को अगर लिखो मेरे को ये सिम्टम आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, इट विल टेल यू एवरीथिंग इज रॉन्ग विद यू, यू आर हैविंग कैंसर, यू आर गोइंग टू डाई. हेडेक का सीधा कैंसर या ब्रेन ट्यूमर आता है. तो they have convinced themselves so many times with that lie which never existed, that their body, mind and their physiology has actually started functioning and behaving in that certain way. So that is one thing. किसी को झूठ बोलते हो, आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो. और आप ट्राई करके देखना, किसी झूठ को आपने बहुत सालों से पकड़ा हुआ है, जो आप बोल रहे हो किसी और को या लोगों के साथ, वो आपके लिए सच बन चुका है, पर है वो झूठ, राइट. एंड अगेन another thing with karma is your reputation also. Yes. Reputation with yourself. Yes, exactly. Looking at yourself in the mirror, are you really able to see yourself? एक बार अपने आप को सामने मिरर के आगे खड़े होकर बोलो कि मैंने झूठ बोला है, मैंने ये बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था. शर्म आती है कि नहीं? शर्म आती है, that means wrong karma. Yes. You can decide that. Right? Yes. Also guys, it's not about, shaming the past. It's about controlling the present and future. Yeah. आज अगर आपको लगता है, because
both of us also learned from experience, and if you think this would मैंने बहुत affect you, झूठ बोले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बहुत बोले हैं. yes, वो ये कि but over time you'll just start believing those lies, and this might be just level 1 of insanity. And it's okay because sometimes you have to lie for the betterment or for the conscious of the other person. Sometimes you cannot tell exactly what happened. बहुत बार ऐसे instances होते हैं कि मैं parents को exactly उस time पे वो सच नहीं बता सकता, and I have to go around so that उनकी conscious comfortable रहे. And there are few instances, but again there's a difference between that. We'll talk about this is very interesting because इसमें intention भी matter करता है. intention. Yes, right. That is the point. आप ये ना सोचो कि भाई honesty के चक्कर में आप लोगों को hurt कर रहे हो और कह रहे हो I'm brutally honest. That is stupid. Because there that's will lack be, of empathy. Yes, there will be a point in your life where you will be asking a question, or you will type Sadhguru in the comments, sir, is lying right? क्या हमेशा सच बोलना चाहिए? क्या झूठ बोलना गलत है? And that is where your intention will come into play. Beautifully said. Yes. Next आ जाता है concept altruism का, basically doing things for others who cannot do anything for us. Animals हो गया या donations हो गया या stuff like that. अभिनव क्या views है आपके? Nothing. It makes you feel good, यार. Yes. It makes you feel good. Science है. हाँ, it makes you feel good. Like वो अलग बात है जो वो गाने चलते थे, 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. Like, I don't believe in that. It's just that it makes me feel good. A lot of my friends, a lot of people that I meet, they do it because किसी पंडित ने बोला है कि आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में आपको उन्नति हो जाएगी, whatever, उन्नति हो जाएगी, progress हो जाएगी. I have never been like that. I've always listened to my intuition, and every time I've done that, I get a huge smile. I feel good. My day goes good. So that's enough for me. Yes. I look at it in that manner. Same, 100% same for me. If you are doing this so that God would do something for you, आप God के साथ business करने की कोशिश कर रहे हो, try not to do that. Do good for others, and नेकी कर दरिया में डाल. Very true. इसमें चलो एक क्वेश्चन है. Sure. So if you do anything good, what are your personal views on this? कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि नहीं? And it is your choice. Who cares? If you really felt that feeling, I will post it and I will write what I felt. I'm not asking you to give me any. Like, again, intention. Yes. What is your intention? I'm sharing it because I felt good. I'm sharing a moment with my family. I'm sharing I'm sharing a moment with my mother. I'm sharing a moment with my father, not to get followers, not to get sympathy from you, or not to get, oh wow. Yes. Wow, Abhinav, yes, great wow. human. Again, you have to recheck. I recheck, and whenever that intention is in question, I won't post it. Right. But if it's like something felt as if I should share it, or sometimes I look at social media as just my blog, and I want this particular experience to be there. Yes. That is the only intention that I have. I'm okay with it. Right. This is a great pointer. And मेरा personally view ये है कि lot of times at the stage where we are, a lot of people look up to us. Yes. If they see us doing good stuff, maybe they might just get inspired from that. Yeah. So yeah, in the end intention matter करती है. अगर आप सोच रहे हो कि likes और comments ज़्यादा I know a lot of YouTube channels and a lot of social media personalities who have made their career while doing this. कहीं पे सब्जी वाला खड़ा है, उसको सरप्राइज कर दिया, बर्थडे पे अपने बर्गर्स बांट दिए, उसकी वीडियो डाल दी, एंड दैट इज हाउ देयर करियर स्टार्टेड, एंड दे स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर, पीपल गॉट इंस्पायर्ड. सो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी. यस. स्टडीज़ की बात हुई तो मैं ग्रैटिट्यूड पे एक स्टडी के बारे में बताता हूँ. स्टडी ये थे कि बेसिकली जो नॉर्मल मैनर्स होते हैं, चलते फिरते लोगों को थैंक यू बोल दिया, किसी ने डोर खोला आपने उसको थैंक यू बोल दिया, जो बेसिकली फॉर्मल मैनर्स वाली चीज़ें होती हैं, बेसिकली जो हमें एज मैनर सिखाया गया. जिन लोगों में ये एटिकेट्स वाला जो ग्रैटिट्यूड था, जो बेसिकली फॉर एग्जांपल इवन आई एम सेइंग थैंक यू टू यू, अंदर से मीन नहीं है, मन भी नहीं कर रहा, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड द हैप्पीनेस एंड मूड फॉर पीपल. And it gives better results. And this is something that I've experienced all the time. Just yesterday, I was in Delhi, and I have not had a good Starbucks coffee from a long time. Yes. It's not that they don't make good coffee, but for some reason, I have not liked their coffee from a long time. Yes. So yesterday, same ingredients, everything same. There was this person, and I gave them the best smile. I gave them the best energy. Somehow I was in a good mood, and I got the best coffee of my life. Of my life. So it was oats milk with just half shot of coffee, because I didn't want, and I made it like I asked them to make a cold latte. Right. Best
cold latte of my life. So I just recall that. Actually बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता है, मेरी बेस्ट कोल्ड लाते ऑफ माई लाइफ भी एग्जैक्टली सेम ड्रिंक, बट इट वाज इन बाली में एक बड़ा सा स्टारबक्स है उधर थी, उसमें बट साथ में ब्राउन शुगर डलवाई थी, बट इट वाज वेरी गुड. Yeah, so see, there's a practical aspect of, you know, doing this altruism thing. Like, give your good energies, you might get better result from the other side. And guys, अगर आप लोगों को थैंक यू बोल रहे हो just out of formality also, that would also, thank you, sorry, all of these things would also make you feel better. And there were researches also, I think they was done, you're in a restaurant and they did this study as to saying thank you to the waiters, or you know, having those etiquettes, being formal. It resulted in having better tasting dishes and better service, yes, as compared to if you were cold or rude with them. Yes, they didn't do that, which is very obvious. Again guys, so फिर एक और भी benefit है outward benefit, but again it is common sense, and you know it should actually come from respecting all human beings irrespective of where they are in their life. Human beings and animals. Yes. So last but not the least, what are your views on spirituality as business? This is a very interesting topic because I was waiting for the commercial aspect to come in and I thought that we are not discussing it, but you brought it. So let's talk about the commercial aspect of spirituality. Now I have traveled good amount of places and I've come across a lot of these so-called businesses which are called healing businesses. Yes. Making you more spiritual, making you more meditative. Although I'm neutral for most of the things or for most of the stuff that happens, but if this particular thing, this spirituality as a business is interfering, it is in your normal day-to-day life, is interfering in your personal relationships, then I think you should recheck it. Yes. Okay. But if it is something that is improving your life, your relationships, your anger management, your stress, then I think it's fine. There's nothing wrong with it. Yes. So that will be a take, but then I would also need more feedback from you and then we can go. Yes. दो चीज़ें mention करूँगा यहाँ पे. पहली चीज़ तो no one values free stuff. ये मेरा point of view है. Yes. Right? If I want to spread positivity and if others are paying me, the more they pay, more attention they pay. Right. Simple example देता हूँ. Coaches हैं हम. Right. आज हम डिसाइड करते हैं, हम एक करते हैं यार, ओके वील जस्ट कोच पीपल फॉर फ्री. राइट. हाउ मेनी पीपल वुड फॉलो द प्लान? वेरी लेस पीपल. नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा. मेरे फर्स्ट 5 years बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड विद आवर बिजनेस, एक्चुअली विद द बिजनेस, आई जस्ट यूज्ड टू हेल्प पीपल फॉर फ्री, राइट, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट. 90% ऑफ देम डिड नॉट डू शिट बिकॉज नो वन वैल्यूज फ्री स्टफ. सो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें यू आर एक्चुअली चेंजिंग लाइफ्स एंड वेयर यू आर एक्चुअली इम्प्रूविंग लाइफ्स ऑफ पीपल वाइल इम्प्रूविंग योर्स, दैट इज टोटली फेयर एंड चांसेस आर दैट इफ यू पे मोर अटेंशन यू विल पे. सो अच्छी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. बट ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, अगर अगेन आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रीच कर रहे हो, आप एजेंडाज बना रहे हो, आप रिलीजन रिफ्ट्स क्रिएट कर रहे हो वाया दिस जस्ट टू गेट पॉपुलर, देन यू नो this is not the right thing. Exactly same thing. Just see how it is affecting your everyday life experience. If you feel good about yourself, about people around you, about the work that you do, about your health, about your mental health, physical health, whatever it is, I don't mind paying it, man. Yes. I don't care how much I have to pay if I can afford that and I can get those benefits in my life. Yes. But if you're doing those things and you feel yourself becoming mentally weaker, or they are becoming crutches, this word spirituality or meditation. Just for example, some people have a deep belief कि जब तक वो एक particular spiritual element नहीं करेंगे अपने दिन में, या कोई crystal कोई होगा उनकी लाइफ में जो क्रिस्टल को नहीं रिचार्ज करेंगे, तब तक उनका दिन अच्छा नहीं जाएगा. And then they start attaching each and every bad thing that has happened in the day because उनका क्रिस्टल चार्ज नहीं हो पाया. ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात करी है. एंड यू नो इफ आई लिंक इट विद टुडेज एपिसोड, हमने कोई एक भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं करी जो दैट इज मैजिक और अ शॉर्टकट कि यार मैंने जिंदगी में ये किया वो हो गया कुछ फायदा. ऑल ऑफ दीज हैव सम यू नो मेटाफिजिकल थॉट्स ऑल्सो, बट हर चीज लिंक बैक कर रही है एक लॉजिक के साथ. इवन इफ यू डोंट बिलीव इन समथिंग,
And if you are logical, you will be able to understand. Ye crystal charging, nothing against anybody. Maybe these things work also, but I love the idea of it though. I love the faith and the idea of it. But when it becomes a crutch in your life, then I start having a doubt, because nothing should actually become a crutch. Even if I have a habit of praying Hanuman Chalisa at night, one day if I don't do it because I'm really tired and I forget it, ऐसा नहीं मुझे I shouldn't be freaking out. मैंने हनुमान चालीसा नहीं किया, मेरे को नींद नहीं अच्छा आया, हो ये हो गया. Yes. So okay, like you have to be comfortable with the fact that things are not going to be perfect all the time, and this word spirituality, make it a good part of your life, a good energy in your life. Introduce it as an addition which brings positive change, rather than being a crutch or paralyzing you from doing normal day-to-day life things. Definitely, this makes a lot of sense. And guys, in the end, see, we have discussed so many tools. The thing is, whatever you feel is logical, start with one tool. Yes. Right? ऐसा नहीं है कि, Abhinav has been doing this since a decade. I've been doing this since 4-5 years. So fact of the matter is, whatever sails your boat, whatever you believe in, start with that. And in the end, it's about, being a good human, respecting other humans. And I think if this helps you, I think this is one of the most powerful episodes so far. What do you think, Abhinav? I think it was beautiful. Can I add one more element? Yes, I don't know if please. it will make sense, but a lot of us and the people watching, we've not forgiven ourselves or others from the past. So I think forgiveness is one other important element that we can just have some verdict on before we end the show. So this is a great point. Because you asked me, Abhinav, you tell me about this. I'm asking you, Yash, your thoughts on forgiveness. This is a great, I literally got goosebumps because of this, because this is such a great pointer और इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं अभी तक, मतलब at least मैंने नहीं सोचा. Talking about forgiveness, if you don't forgive others, again, resentment किसके mind में? आपके mind में. Right. If you don't forget yourself, you're not allowing yourself to improve, right? Guilt is a very bad feeling. I have, done some things in my life जिसकी वजह से काफी guilty feel किया. But that's instead of losing hope and sitting कि यार भाई मैं क्या बंदा हूँ, instead I just ask myself that what is in my control, present and future. And your past is like a map, whether you want to use it or not. अगर आप उसको use कर रहे हो, you'll forgive yourself also. Same goes for others. Others are on the same journey as yours. Also keep in mind that it's very easy to wake up and point fingers at others. Right. And it's very difficult to wake up and look into the mirror and asking yourselves, what have I done? How can I improve? Do that every day, and life would change, and forgiveness would just become a part of it, because a lot of times things take time. Forgiveness also would take time, right? Because if some wounds are fresh, time is the best healer. But again, forgive others because you don't want to keep a negative feeling in your mind, and forgive yourself because you have to live with the person and you have to allow yourself to improvise. Right. Beautiful. Like I've also been the culprit of keeping a lot of guilt in myself throughout my life for a lot of things. We all make mistakes. We are humans. And I love all the gods and I know they are wonderful. If you go through some stories, especially for the Lord Shiva, if we say, I think that one god is the person who has most amount of guilt in him because of the anger and the rage, and we all have that, and sometimes we are not able to control it because we've not done meditation probably in the morning. Yes, I'm just kidding. but yeah, like again, it's energy. You're not trying to forgive anyone else. Firstly, forgive yourself. Get rid of that energy, because that energy is again the same thing. It is like drinking the poison and expecting the other person would die. So forgive yourself. You'll feel very light, and you'll unburden yourself from a lot of thoughts. That will help you to create new thoughts, positive thoughts, and have a better life. So yeah, that was all. This is great, and keep in mind that forgiveness is not about yourself. Forgiveness is not about the other person. It is about yourself. Yes. So do it for yourself and forgive others. If you have forgiven anyone from the past, and if you wanna message them today, do it today. Mini Sadhguru wali feeling aa rahi hai दोनों को. Such a great day, and this is great. By the way, Sadhguru, we love you. We love now people would be like that, okay, this is what he did not do properly. He does PR and stuff like that. Guys, like we mentioned that, just look at the positive. No one is perfect. Hey man, if anyone's even one line or a video
helped you in one of the toughest phases of your life, I don't care. It made my life better. I don't care Yes. about anything else. Definitely. And, whosoever you believe in, respect to them. Yes. And respect to you. And see you next time. Also, guys, keep in mind we have a Telegram group where we would be discussing spirituality this week and would be answering your questions. Again, we are not gurus. We'll just share our point of view. And as always, our comment section is always open for your questions. So ask away, and over to Abhinav. Thank you so much, guys, for watching this. This was the 5th episode of your favorite show, Being Men, and thank you for watching the whole video. We didn't expect this to be one of the most wonderful sessions that we've had in the last 5 episodes. So we are going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing. See you guys. Bye.